Very good evening to all of you. Yes, good evening, Aditya, and everyone else also. We'll be starting in next 30 seconds. I think few more participants are joining. Okay, so let's begin today's session. Again, a very good evening to all of you, and welcome to After Hours with William in India. So today we will, cover the weekly overview of the market. And I think it's easy to describe this week, or is it tough? But I think this picture makes it very easy. So this is how the week was. So if you start the 400 points gap down on Monday, and then there was some recovery on the Monday, some 150 points recovery and closing above the 300 level. Again, Tuesday, that was an excellent day for the market. 750 750 के ऊपर निफ्टी बंद आया था 750 yes. And again, like after we celebrated the festival of Ganesh Chaturthi on Wednesday, there was a break. So on Thursday again there was a gap down opening. Today again it was a very flat move. हाँ, Thursday बहुत volatile था intraday. So but हाँ, अगर पूरा देखे तो ये झूला झूल के flat बंद आ गया बाजार. So last Friday also when we met, कुछ 550 के अराउंड ही था निफ्टी, और आज भी ऑलमोस्ट वही लेवल पे है निफ्टी, कोई मेजर चेंज नहीं है. So yes, this is how the week is. So if you can look over here, so यहाँ पे gap down था मंडे को, then there was some flat trade और around 350 closing हो गया था मंडे को, and Tuesday you see there was a single one way route on Tuesday, and then again after Wednesday's break there was a gap down, and you can see since last couple of days it's almost flat. 500 के नीचे ज्यादा जाता नहीं है, वहां पे अच्छा सपोर्ट मिल रहा है 500 लेवल पे, and it is not able to move about the 650 700 level since last couple of days. So yeah, this is the index story of the week. So see, Monday's gap down, I think we understood couple of times. Jackson Hole का जो speech था पवल सर का, जो कि फेड के चेयरमैन है, आफ्टर दैट देयर वाज अ लॉट ऑफ वॉलिटिलिटी इन द यूएस मार्केट एज वेल. It sharply went below, and one important thing, see, our market relatively hold किया. But if you look at the global market, especially the US market has already breached its 50 DMA, and it has been shifted to downtrend by our global team. So currently, Indian market is in a confirmed uptrend, but the US market has been shifted to a downtrend. And even if you look at the strength in the Indian market, see, Monday 21 EMA, the green line over here is the 21 EMA exponential moving average. ठीक है, मंडे को एक बार ब्रीच किया था, ट्यूसडे रिक्लेम कर लिया, एंड देन फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ सेशन इट इज होल्डिंग अबाउट दिस ग्रीन लाइन, दैट इज 21 EMA, एंड दिस इज व्हाट वी वांट, कि जब तक ये रेड लाइन 50 DMA है ना, जितना ऊपर आ जाए ना जल्दी उतना अच्छा है. इट इज कंटिन्यूसली मूविंग हायर. So once you get a very comfortable zone with 50 DMA, then it becomes, the strength in the market improves. But for now, one thing to remember for the next coming week, that is 21 DMA should hold, और यहाँ से आगे जाना चाहिए. So if you look at this Tuesday's candle, so Tuesday का जो candle था, so next two session, that is Thursday and Friday, उसका low high कुछ breach नहीं हुआ, ठीक है, छोटी रेंज में कंसोलिडेट हो रहा है. आज भी आई थिंक यस्टरडे थर्सडे का लो ब्रीच नहीं हुआ था, तो वहां से रिबाउंड हो गया था, एंड थर्सडे का लो भी नहीं आया. सो इट इज मूविंग समथिंग लाइक दिस, इफ यू कैन सी निफ्टी. सो नॉट अ प्रॉब्लम टिल इट इज मूविंग अबाउट दिस ग्रीन लाइन, दैट इज 21 EMA. If Nifty continues to trade about 21 EMA, then that's a very very positive zone, and you can expect a higher move from there. Now, अभी मार्केट में वीकनेस कब दिखता है? टू थिंग्स. फर्स्टली, कि कोई एकदम बड़ा डाउनसाइड रिवर्सल आ जाता है, ठीक है, हाई पे जाके. यहाँ पे थोड़ा दिखा था, बट इतना प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि वॉल्यूम रिलेटिवली लोअर साइड था, इतना हाई वॉल्यूम पे नहीं हुआ था. एंड इफ यू लुक एट द ब्रॉडर मार्केट,
स्पेसिफिकली कैश मार्केट में बहुत अच्छा मोमेंटम है. द प्रॉब्लम इज मेजरली रिलेटेड टू फ्यू सेक्टर्स, जैसे कि देयर इज वन क्वेश्चन आईटी. सो आईटी इज अंडर परफॉर्मिंग, देयर इज अ ह्यूज अंडर परफॉर्मेंस ग्लोबली. जो जब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, रेट्स कट करने का कोई सिग्नल नहीं है अभी. सो क्या हो रहा है कि द मार्केट इज प्राइसिंग इन कि हाँ अभी थोड़ा स्लो डाउन आएगा मार्केट में, रिसेशन आएगा या नहीं आएगा कोई नहीं कह सकता, बट यूरोप में प्रॉब्लम है, यूएस में प्रॉब्लम है, तो थोड़ा ग्लोबली स्लो डाउन आएगा. इन्फ्लेशन की वजह से जो आईटी का स्पेंडिंग है वो कम हो जाएगा, एंड ऑल दीज फैक्टर्स आर गेटिंग प्राइस्ड इनटू द आईटी. So once the budgets for the technology is not high, then our companies might get the new order value might be a bit lower for the Indian IT service firms, and that's what all the game is about, the pricing and all those things. But what I was talking about is the top formation. अभी टॉप कहाँ पे फॉर्म होता है कि जब यू सी द डिस्ट्रीब्यूशन डे काउंट, दैट इज वी ट्रैक. सो डिस्ट्रीब्यूशन डे क्या होता है? 0.2% लॉस. ठीक है, 0.2% लॉस ऑन अ वॉल्यूम हायर देन प्रीवियस सेशन. ठीक है, प्रीवियस सेशन से हायर वॉल्यूम पे मोर देन 0.2% का लॉस होना चाहिए. सो आइडियली इस वीक पे दो बड़े लॉसेस आए, बट देयर वर नो डिस्ट्रीब्यूशन डे, क्योंकि वॉल्यूम जब भी मार्केट गिरता है ना, वॉल्यूम रिलेटिवली कम हो जाता है. सो दिस इज वन पॉजिटिव थिंग. सेकेंड थिंग, यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन डे आया था ऑलमोस्ट 25 सेशंस पहले. जब मार्केट एक बार कंफर्म अपट्रेंड में आया तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन डे आया था ये वाला. तो अभी क्या हुआ कि उसको 25 सेशंस हो गए. सो अकॉर्डिंग टू आवर रूल्स, सो वी वर्क ऑन रूल्स, जो वो 25 सेशन के बाद वो डिस्ट्रीब्यूशन डे फॉलो ऑफ हो जाता है. So currently we are only, the distribution day count is only one, and that's very comfortable. Like one distribution day is not a matter in this market. So overall there is no major issue as of now. But yes, one important thing कि हम बहुत close है, जो ये green line आप देख रहे हैं 21 EMA, we are very close to that line. And if we see that next week the distribution day early Monday या Tuesday को आ गया और ये line breach कर गया, then one should be very careful. तो सेकेंड लेवल ऑफ सपोर्ट जो बन जाएगा वो 150 का लेवल होगा, क्योंकि यहाँ पे भी जब वॉलेटाइल था, ठीक है, तो 150 के अराउंड सपोर्ट मिला था, यहाँ पे फिर से मिला था. So I think firstly this green line, and secondly 17,150, these two level becomes very crucial on the downside. On the higher side, जैसे जैसे कि ये आज का हाई या फिर थर्सडे का हाई जैसे निकालता है, then it will try to test the Tuesday's high, and from there it might move towards the 17,992. So yes, very stable zone as of now, but we are at a very critical level for the downside. As well as if we see the 100 200 points move on the higher side, then there could be some more further move possible, especially in the bank nifty. अगर बैंक निफ्टी देखिए 39,750 के ऊपर एक बार जाता है, then that will be very strong setup for the bank nifty. If you look at the today's top gainers and losers, so the ITC, Adani Port, HDFC, so there was a mixed action. ऐसा नहीं था कि कोई FMCG या metals पे या banks पे skewed था, but yes, financials, banks, L&T, Adani Ports and ITC were among the top gainers. On the flip side, uh, yes, there was some problem in Shree Cement. Because it is going out of Nifty 50 and it will be shifted to Nifty next 50, और उसकी जगह Adani Enterprise will be enter into Nifty 50 ये month end से. The other decliners were BPCL, Hindalco, Hero Motor and ONGC. So the crude price has substantially come down, and that's very positive for the Indian economy and the market as a whole. ठीक है, ONGC को थोड़ा दिक्कत होगा, but if crude remains below 100 and that also below 95, जितना $1-2-5 जितना कम होता है, that is always positive for the Indian market, क्योंकि इन्फ्लेशन वहां से कंट्रोल हो जाएगा, और then RBI has to take जो रेट हाइक का डिसीजन है, that could be easy for the RBI, कि इतना प्रेशर नहीं रहेगा इन्फ्लेशन पे. If you look at the sector view today, then again bank was a bit doing better, financial service was good, FMCG, ITC was making new highs,
right? Then media metals were almost flat, but कोई मेजर एक्शन नहीं था. देखो कोई भी मोर देन आई थिंक 8-9% ऊपर नीचे कुछ है नहीं. सो रिलेटिवली आज का एक्शन फ्लैट था, इवन ऑन द निफ्टी एज वेल एज ऑन द सेक्टोरियल फ्रंट. तो देयर वाज सम सेलिंग हीरो मोटर वगैरह में. तो ऑटोज वेर अंडर प्रेशर. आईटी अगेन कंटिन्यूज टू बी ऑन द डाउन साइड एंड आफ्टर अ वेरी गुड रैली. सो पीएसयू बैंक में आज थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग दिखा. But overall sector setup, not a problem. Yes, there is some issues in the IT. Now, if you look at the key news, not a major one. And Natco Pharma will be selling its 50% stake in the one of the joint company. And if you look at Tanla, it will be considering buyback on 8th September. And IndusInd Bank partners with ADB to support supply chain financing with an initial outlay of 560 crore. Adani Port August Cargo volume increased 18% YOY to 29.3 MMT, and HBL Power backed order worth 673 crore from the Indian Railways. Now, if you look at the chart of the day, so this looks very interesting to us. That is Mahindra and Mahindra Finance. So if you can see, Nifty Finance is doing really well. And so if you pick one stock from the finance sector, then this is stands good. So this is stage one base. ये जो कप विथ हैंडल बनाया, ठीक है. और उसके बाद जब ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद यहाँ पे बेस ऑन बेस बनाया, दैट इज 1B. सो दिस इज गुड सेटअप. जब भी एक बेस ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे दूसरा वो भी फ्लैट बेस बनता है ना, तो ये एक्शन बहुत अच्छा होता है. सेकेंड थिंग, तो फर्स्टली व्हाट आई लाइक इज दैट इज BOB, दैट इज बेस्ड ऑन बेस. कप विथ हैंडल के बाद फ्लैट बेस. द सेकेंड गुड थिंग अबाउट दिस चार्ट इज सपोर्ट एट 50 DMA. तो जो ये रेड लाइन आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो जब ये बेस बनाया था, एक बार ब्रेकआउट हुआ तो ये रेड लाइन ब्रीच नहीं किया. दैट इज द 50 DMA लेवल, वो ब्रीच नहीं किया. सो सेकंड गुड थिंग अबाउट दिस चार्ट इज द 50 DMA होल्डिंग. द थर्ड, इफ यू लुक, इज द RS स्ट्रेंथ. तो यहाँ पे इंप्रूव हो रही है जस्ट बिफोर द ब्रेकआउट. सो अगर अराउंड 212 213 ब्रेकआउट जोन है, आज उसके नीचे ही बंद हुआ है, बट लुक एट द एक्यूमुलेशन ओवर हियर. यहाँ पे एक्यूमुलेशन बहुत अच्छा हो रहा है एंड द इट इज मूविंग on the higher side. Other things, the fund holdings have increased, right? The earnings growth is very good. In fact, the EPS growth, revenue थोड़ा last couple of quarters में इतना growth नहीं था, but I think again in June 2022 the growth was very good. But yes, earnings is very good, and I think on the revenue front also there is an improvement expected. But overall structure looks quite good. So once this can be the part of a watch list. So once it breaks about this 213 level, which is the pivot 212.50, that will be the 0 to 5% is always the ideal buy zone for any stock. So that's it for the today's session. Thank you for joining. And yes, you can join tomorrow at 11:30. So Mayuresh Joshi, our head of research, will be having a chat with one of the market veteran, Shankar Sharma sir, and you can watch it live tomorrow at 11:30. And the link is already here in the room, and you can just save that link from the chat box. So do join if possible at 11:30 tomorrow morning. It will be a very interesting to learn from Mr. Shankar Sharma that how to navigate through this market and what are the positives and negatives going on around in the current market. So thank you for joining today's session. So see you guys tomorrow at 11:30 with Mayuresh Joshi and Shankar Sharma, and again at 8:45 on Monday morning with pre-bell.